गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 अप्रैल। सुबह के बज रहे 12। एक्चुअली पता है क्या हुआ? कल शाम को मेरे पैरों में इतना खतरनाक वाला मोच आया ना, लिटरली पूरी रात में सो नहीं पाया। एंड आज सुबह मैं 9 बजे उठा एंड देन ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके रेस्ट लेके बैंडेज वैंडेज करके अब बैठा हूँ पढ़ने। अभी भी पेन है और पेन कम नहीं हुआ। पता नहीं, शायद डॉक्टर दिखाना पड़े शाम को। आई डोंट नो, बट खैर अभी टाइम मिला है तो थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग कर लेते हैं। बड़ा गंदा वाला मोच है। मतलब आई स्वेयर रात को इतना ज्यादा पेन था, मैं सो ही नहीं पाया। बट एनीवेज, विदाउट एनी डिले एंड बुलशिट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहा स्क्रीन जो है, शेयर हो रहा होगा। तो मैं बूट ये कर रहा था, बूटस्ट्रैप। सो वही करूँगा अभी। Okay. If I'm not there, if you are learning it on your own, how will you search? You just search for font size. Okay. And you reach somewhere here. What does that mean? I was just trying to explain that the bootstrap documentation is very well written. Okay, and you can simply find whatever property that you want to use in the bootstrap documentation very easily. And here you can see FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6. These are the properties in which we can give different sizes. And if you try to understand or relate, don't you think these were the sizes of the H1, H2, H3, H4, H5, H6? Well, these are actually based on data in which we understand what are the most commonly used sizes. These are the most commonly used sizes. And since these are the most commonly used sizes on the website, these are the sizes that Bootstrap has presented us. Okay, I want you to understand something really good. I'm copying it. Just check. So I'm copying this and pasting it here. So these are the classes. And now I want you to focus on this particular thing. Okay, because something interesting is coming up. Just check how the size of this particular text is decreasing. Can you see with change in size of the page, the size of the text automatically starts to decrease. Why? Because I told you that it is responsive. I told you that Bootstrap is responsive. Hence, it made the text shorter as the page size got shorter. Okay. So I hope that is also clear. FS-1 font size. FS easy to remember. Hence, it was FS1, FS2, FS. So this marks done. I'm also marking done on the font size. So let's discuss text line, text decoration, all these such properties. So here are all the text properties. Okay, and we'll not be just copying pasting it into VS Code now because it will again start to take time, and we should be using our time properly, right? So let's discuss. Okay, let's first discuss the text line property. If you just check what was text line, so text line property was nothing. It was just a property to align the text in the horizontal manner, right? So if you just check, this is text start, text center, and text end. Now I want you to understand that in Bootstrap, left is comprehended with start. In future, if you are even wanting to write margin left, you will not write margin left, you will write margin start. Just like that, if you want to align text align to left, it will not be left, rather it will be start. Okay. Then center remains center. Okay, no change there, but right has changed to end. I hope you understand that. Yeah. So that is our discussion on center, start, and end. Okay, using text align start, text align center, text align end, you can get an output like this. This is text start, this is text center, and this is text right. Yeah. Then next would be text transform. So if you check, this is text dash lowercase gives us a lowercase, text uppercase takes uppercase, capitalize takes capitalize. What was capitalized? If I have this as a text, okay, and if I want to capitalize it, what will it do? It will make sure that the first letter of each word is capitalized. Okay, that is what it will do. Okay, this is what capitalized is. Okay. Font size is something that we have already discussed. Let's discuss font weight. So here you can see that this came by FW bold. FW dash bold. FW font weight. Font weight bold is something that is giving us bold text. And bolder simply means that if, let's say, 700 was the font weight of the parent, okay, then if I'm giving this a font weight of bolder, simply means that it would be 800. The child will have a font weight of 800. I hope this was clear. Then this is normal.
This is light, this is lighter, and this is italics. So if I'm writing FST, why FST? Font style. FST italics, that would give me an italicized text, which is this. This is slanted. Okay. So let me erase it a little bit. So here you can see an italicized text is present. Okay. And this is FST normal, which was the two values for font style. Okay. I hope that was clear. Line height is pretty easy to understand. See line height 1, which has no spacing between lines. Line height small, which has small spacing. Line height medium, line height large. Okay. For the medium, we have base. It used to be medium, but then it was changed to base, which was the base value. This is how the text actually looks. Coming to text decoration. So here you can see that this is what it is: text decoration dash underline. And similarly, this is what? This is text decoration line through. And if you remember, the CSS properties that we had, that was also text decoration, underline text decoration, overline text decoration, line through. Okay, so it's pretty easy to remember as well. Similarly, I have text decoration none. And this text decoration none is used with anchor tag. Can you see how good examples they have provided us? This is an anchor tag, guys. This is an anchor tag. And if you remember, an anchor tag comes by default with what? So if I write Google inside an anchor tag, it will by default come with an underline. So if you want to remove this underline, you need to write this text decoration none. Right? So that is our discussion on multiple CSS properties related to text. Let's see what all things did we just cover. So we just covered text align, we just covered text decoration, we just covered font style, we just covered font weight. Any other property did we just discuss? No, that was all. Right? So these were just the properties, and you can see how easy it was. See, we already know what are these properties, how they are used, what is the use case of it, what are the different values each property can consider. Right? So we just wanted to understand what is the way in which we can be used in Bootstrap. These were some classes. We understood these classes, and that is all. Now it's time to understand margin and pattern. Okay. तो अभी तक जो है सर ने जितना बताया, राइट, कुछ खास इसमें कंसेप्चुअल था नहीं। जो बेसिक सीएसएस के प्रॉपर्टीज थे उन्हीं को हम जो है बूटस्ट्रैप में इस्तेमाल कर रहे हैं विद द यूज ऑफ स्पेसिफिक क्लासेस, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सो यहाँ पे बस यू हैव टू काइंड ऑफ कीप इन माइंड दैट देयर आर सर्टेन क्लासेस that you can use to modify your layout and make it responsive. Right. For that, let's go to documentation. So here, I'll write spacing. Why? Because margin and padding are part of spacing. Right. So So here, let's read the documentation one, writing spacing. Oh my god, यार बड़ा खतरनाक वाला मोच आया मेरे पैरों में। आई स्वेयर इतना ज्यादा पेन हो रहा है ना। आह, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, लेकिन बैठे रह के भी क्या ही करेंगे। यूट्यूब में रैंडम वीडियोस देखने से अच्छा चलो यही कर लेता हूँ। सो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। Bootstrap includes a wide range of short and responsive margin, padding, and gap utility classes to modify the element's appearance. Assign responsive friendly margin and padding values to an element or a subset of its size with shorthand classes. Include support for individual properties. All properties.
तो इस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ खास नहीं है, बेसिक स्पेसिंग वगैरह आप दे सकते हो, दैट्स इट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे पैडिंग वगैरह देना है, तो इन दैट केस सच कहूँ तो यहाँ पे पता क्या है, वैसे एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया है कि इस क्लास को इस्तेमाल करो पैडिंग को यूज करने के लिए। लाइक ये तो क्या है, CSS क्लासेस है राइट। तो आई मीन तो एक तो पेन हो रहा है, ऊपर से ये दिमाग काम नहीं कर रहा। चलो देखते ही ये कैसे बढ़ाते हैं। Here is something interesting, guys, and I would like to teach you this in a very interesting way. Just check. This is like a mix and match kind of a situation. You have three things. First is you need to choose margin or padding. Then you need to choose the directions, and then you choose the size. Okay. So let's say I want to create margin left. For margin M, for left we have S because margin left, that means left, and left is comprehended as start in bootstrap. I told you left means start and right means end. Okay, so I'm writing MS for margin left or margin start, and then followed by a dash would be the value. So these are the 0, 1, 2, 3, 5 value that we have, and they will provide us different values for margin. So if I provide ms dash 4, just like that, I created a margin left value which has 4. That means relatively on the higher side. Okay, you'll be understanding how these 1, 2, 3, 4, 5 values are given by practical explanation. Okay, so now let's say ki I want margin everywhere. So I'll just write margin dash 5. That would give me a very high margin on all four sides. If I want margin dash auto, so I'll just write m dash auto, m dash auto. Okay, that is usually used to bring the component in the center, since margin auto provides automatic margin to all the sides, right? So this is like a mix and match situation. You can pick M, then you need to pick all these sides, and then you pick the size. Okay. So I hope this is clear. Let's quickly just again go through all these sides. So T stands for top, B stands for bottom, S stands for left, E stands for right, X. Now X is elastic. So everyone remember margin dash inline property that I told you. So margin inline does what? It provides margin in the x-axis. So this is exactly what you're trying to do. So if you're trying to provide in the x-axis, that means on the left and on the right, you can write mx. That means margin in the x-axis and then whatever value, let's say 4. Okay. Similarly, we have y-axis as well, because why not? If you have x, we will obviously have y. Okay. So my and then whatever the value, let's say 5. Okay. That is that. And blank means that all directions. This is the way we used to give like this margin 5 pixels. Okay, so if you want something like that, then like m dash whatever value you want to give, let's say 3. Okay, so I hope this discussion on how you can give margin, how you can give padding is now clear. Okay, so let's move ahead and let's Let me try it in the documentation, like in myself. So as the documentation says that here is the notation, like spacing utilities that apply to all breakpoints from XS to XXL have no breakpoint abbreviation in them. This is because those classes are applied from min with 0 and up and thus are not bound by a media query. The remaining breakpoints, however, do include a breakpoint abbreviation. इसका मतलब मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, बट खैर द क्लासेस आर नेम्ड बाय यूजिंग द फॉर्मेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देते हैं। प्रॉपर्टी में एम स्टैंड्स फॉर मार्जिन एंड पी स्टैंड्स फॉर पैडिंग। देन यू हैव साइड्स कि कौन सी साइड में देना है। तो साइड में टॉप बॉटम, फिर उसके बाद स्टार्ट एंड। स्टार्ट बोले तो लेफ्ट, एंड बोले तो राइट। एक्स वाई, दिस इज फॉर इन द लाइक in both the directions, ठीक है। x direction and then you have y direction, ठीक है। and then you have blank that sets margin to all the four sides, ठीक है। for access, अब ये access क्या है, यहाँ पे आप
अच्छा, ब्रेक पॉइंट दे सकते हो, ये कह रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप चाहो तो ब्रेक पॉइंट दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एस बोले तो स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए ऐड कर सकते, एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट में ही अप्लाई होगा ये। बाकियों में जो है आपको ब्रेक पॉइंट देना पड़ेगा, राइट। ये है अपने साइजेस। सो व्हाट अबाउट द ब्रेक पॉइंट्स? ब्रेक पॉइंट्स जैसा कि आपने पढ़ा था, बिल्कुल आपने क्या मतलब मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल फर्स्ट शुरुआत में जैसे होता है ना कि मीडियम, स्मॉल, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा कि भाई अगर मीन विड्थ बोले तो मीन विड्थ मतलब कम से कम विड्थ, अगर मान लो जैसे मान लो मीडियम दे तो मीडियम का अराउंड 760 होता है, ठीक है। 760 या 760 से ज्यादा होता है तो भाई ये मार्जिन पैडिंग लगा दो ऐसे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यही बताता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के साथ खूबसूरत तरीके से समझाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा। एनीवेज ये जो है ये इसको ना दोबारा हम कॉपी कर लेते हैं। तो एक एक है इफ्तिकार जहान, दूसरा नाम देते हैं जेनिफर रहमान। पता है ये कौन है? ये जानवर की डॉक्टर है। मैंने ऐसे ही दिया, मेरे दिमाग में आ गया इसलिए। खैर, तो आप देख सकते हो कि ये दो नाम आ गए, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें आप मार्जिन पैडिंग सब दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है इस जेनिफर रहमान से थोड़ी सी दूरी इख्तियार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें मार्जिन दे देता हूँ। कितना? मार्जिन इन मैं चाहता हूँ कि मार्जिन बॉटम में आ जाए कुछ। एक बार मैं देख लेता हूँ कैसा था प्रॉपर्टी, तभी दे सकते हैं ना। ये देखो, पहले हम देंगे प्रॉपर्टी दैट इज एम, उसके बाद देंगे साइड्स। साइड में दूंगा मैं बॉटम, एंड देन मैं साइज दूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इनमें से कोई एक वैल्यू तो हम देते हैं। मार्जिन बॉटम दैट इज लेट्स से 4। 4 का अगर मैं मार्जिन बॉटम देता हूँ तो क्या हुआ? अब देख सकते हो कि यहाँ पे मार्जिन लग गया है। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो एंड देन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तभी आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो मार्जिन बॉटम लग चुका है। इसको आप ऑफ करोगे तो ये देखो जगह बंद हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पैडिंग मिल जाए दोनों को। तो पैडिंग अगर दोनों को मिल जाए जाना चाहिए तो मैं कैसे दूंगा पैडिंग, अभी बताता हूँ। जस्ट जैसे कि आपने मार्जिन ऐड किया वैसे ही पैडिंग प्रॉपर्टी देना है। और पैडिंग में चाहता हूँ कि चारों के चारों प्रॉपर्टी चारों साइड, तो इसलिए मैं जो है इसको ब्लैंक रखूंगा, ठीक है। और सीधा दूंगा पैडिंग 4, ठीक है। और इसमें भी मैं दूंगा पैडिंग 4। इससे क्या होगा? अब देख सकते हो पैडिंग मिल गया दोनों को, ठीक है। वैसे बड़ी स्वीट लड़की है जेनिफर, है ना। बस मुझे डर है कि कहीं ज्यादा बात करे तो रिश्ता ना बन जाए, इसलिए मैं दूरी बनाए रखना चाहता हूँ। खैर, एनीवेज बिना किसी बकचोदी के काम पे लग जाते हैं। हमने दे दिया मार्जिन पैडिंग। अब हम चाहे तो ब्रेक पॉइंट वाला जो पॉइंट था वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जो है ये पैडिंग ना पहले इसमें मैं देता हूँ 2, ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली विल गेट टू नो द डिफरेंस। लाइक पैडिंग आपने 2 दिया, ठीक है। अब जो है अ, अब जो है इसमें भी पैडिंग में 2 देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि जब मेरा पैडिंग, ठीक है, जो है ब्रेक पॉइंट दूंगा मैं, मान लो मीडियम, नहीं मीडियम नहीं, देखता हूँ मैं ब्रेक पॉइंट कौन सा दूंगा। ब्रेक पॉइंट दूंगा मैं लार्ज। लार्ज देता हूँ ब्रेक पॉइंट, ठीक है। फिर देखता हूँ जब मैं ब्रेक पॉइंट दूंगा मैं चाहता हूँ कि पैडिंग जो है लार्ज में पैडिंग आ जाए 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी पैडिंग लार्ज 5। अब क्या होगा पता है? मैं आपको दिखाता हूँ। तो लार्ज से जितने भी बड़े होंगे सब में पैडिंग 5 लगेगा, उससे छोटे में ये देखो लार्ज का कुछ 900 पिक्सल के आसपास होता है, ठीक है।
जैसे ही आप उस पिक्सल को रीच करोगे ये पैडिंग दे देगा आपको 5 का। ये देखो, दिस इज मदर फकिंग अमेजिंग, राइट? सी, बड़ा सेक्सी सा, ये क्या कहते हैं इसको, बूटस्ट्रैप क्या है ये? कोई लाइब्रेरी होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स एन अमेजिंग टूल टू प्रोवाइड स्टाइल्स। उसके बाद आप एलिमेंट्स को सेंटर भी कर सकते हो, तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये चीज़ है। एनीवेज, मार्जिन एम एक्स दे देता हूँ ऑटो। ठीक है, अगर मैं ये देता हूँ तो क्या होता है देख लेता हूँ। एम एक्स ऑटो देके, एम एक्स ऑटो, ठीक है, इससे क्या हुआ? आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। एम एक्स ऑटो देने से शायद ये सेंटर हो गया, बट मुझे ये दिख नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर सवाल का जवाब अभी मिलेगा ये कोई ज़रूरी तो नहीं। Let's take up some few examples of it. Okay. So now, if you remember that there was some. पीछे मेरी मम्मी है, वो रूम साफ कर रही है। एक्चुअली वो अपनी मायके गई हुई थी, तो इसलिए रूम बहुत गंदा हो रखा है, तो वो रूम साफ कर रही है। आप उनको इग्नोर कर सकते हो, है ना? आप कहो तो मैं इनको डांट भी सकता हूँ, है ना? डांट दो, रुकिए। हे, हाँ, at last! चलिए, मैंने डांट दिया, पर मुझे भाव नहीं दिया मेरी मम्मी ने। M and P things that were present here, right? So now that they are gone, let me quickly add it here. So let's add M dash 5 and let me show you the output. Okay, just check. Wait, work on it. This is the margin that I gave. This is the margin. This is the margin. Margin, margin. My phone Okay. charge, this phone charge. This is this high value of margin that I gave. See, 5 is the Fast. highest value and I get the highest number. Let's हाँ, change it to 2. You can see the margin has relatively decreased. एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, लाइव स्ट्रीम अच्छे से हो रहा है या नहीं। कभी कभी छूट जाता है, मतलब अच्छे से नहीं होता है। चलिए, अच्छे से हो रहा है लाइव स्ट्रीम। Okay, see it has relatively decreased. If I want to give only in the x-axis, you can see margin is only in the x-axis. Can you see the orange color on the left and the right? Okay, see on the left and on the right. This is coming up because of margin. Then let's only give it in the top. If you only want to give it on the top, you can see every particular element now has a margin on the top. Okay. Similarly, let's write something called padding as well. So if you want to give it a padding of 4 to every particular element, you can see the green colored area that comes up, that is the padding. And if I give bg dash primary, you will see that padding is included in the bg, right? And that is how we add padding and margin. I hope this discussion on how paddings and how margins are added is clear to you. Okay. So with that in mind, I'm marking margin as done, and where is the padding? Yeah, this was done. Okay. So now that this was also done, we have covered a lot of properties so far. Okay, so let's quickly discuss the border property now. And border property is actually very interesting. Border property helps us create the border ground. And I would like to show you that it has some additive and subtractive thing that we are trying to do. So now it's time to understand the borders here. Borders are working a little differently in terms of adding borders to the elements. And here is some additive and some subtractive things that are present. Okay, let me show you what it means. Right. So here, just चलिए, पहले डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, उसके बाद सर का वीडियो देखेंगे। इसी तरीके से जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत लग जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। अगेन, use border utilities to quickly style the border and border radius of an element, great for images buttons। ठीक है, use border utilities to add and remove an element's border, additive, add borders to custom elements, border top, border and border bottom, border start। Mm, 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 mm.
ये समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है इसमें। चलो बॉर्डर क्लास दे दे, फिर बॉर्डर जीरो। अच्छा जीरो लिखते हैं तो शायद बॉर्डर खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ होगा। बॉर्डर यूटिलिटीज में आप कलर भी दे सकते हो। अच्छा ऐसे, अच्छा बॉर्डर, बॉर्डर अगर प्राइमरी लिखते हो तो बॉर्डर में कलर दे सकते हो। अच्छा सेक्सी, वाह। और मॉडिफाई द डिफॉल्ट बॉर्डर कलर ऑफ अ कंपोनेंट। कोई अगर आपके पास कंपोनेंट है तो आप बॉर्डर की कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके। अच्छा, अच्छा, आप ओपेसिटी भी दे सकते हो। गुड गुड गुड। विथ भी दे सकते हो। बॉर्डर 1 2 3 4। तो फिर ये बॉर्डर क्लास का काम क्या, मतलब बॉर्डर दे के फिर आप बॉर्डर 1 दे रहे हो, मतलब बॉर्डर 0 दोगे तो क्या होगा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब यहाँ पे राउंडेड भी लिख सकते हो, राउंडेड वाउंडेड लिखते हो तो राउंडेड टॉप से टॉप में राउंडेड हो जाता है, राउंडेड एंड इस साइड राइट में, राउंडेड बॉटम, राउंडेड स्टार्ट, राउंडेड सर्कल, राउंडेड टिल। ठीक है। साइजेस भी दे सकते हो, राउंडेड 0, राउंडेड 1 2 3 4 5। राउंडेड बॉटम 1, राउंडेड स्टार्ट। अच्छा सी एस एस वेरिएबल्स खास नहीं है कुछ, है ना, इसमें भी वही बकवास है। तो मैं आपको बॉर्डर दे के दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्लासेस का नाम देख लो क्या देना है। बॉर्डर, जैसे मान लो मैं देना चाहता हूँ बॉर्डर टॉप। बॉर्डर टॉप से मतलब ये हाईलाइट हो रहा है, ये नहीं मतलब इससे बॉर्डर लग नहीं रहा। अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इसमें मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर टॉप अगर मैं लिखूंगा ऐसे तो कुछ नहीं होगा। आप देख सकते देखोगे, मतलब इससे बस हम कह रहे हैं कि हाँ भाई हम बॉर्डर देना चाहते हैं, देखो कुछ नहीं हुआ। ये से नथिंग हैपेंड, राइट। बॉर्डर लगा नहीं है अभी तक, तो बॉर्डर अभी तक तुमने दिया नहीं है। तो ऐसे रिमूव भी कर सकते हो बॉर्डर, चलो हटाओ उसे। तो अब जैसे तुम अगर इसमें बॉर्डर और बॉर्डर प्राइमरी देते हो तो दोनों साइड में तुम्हारा एक कलर्ड बॉर्डर लग जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। बॉर्डर, और यहाँ पे तुम दोगे बॉर्डर PRIMARY प्राइमरी। इससे क्या होगा, प्राइमरी कलर का जो बॉर्डर था ना ब्लू कलर, ये लो बॉर्डर प्राइमरी। आप इसमें साइज भी दे सकते हो, ठीक है, प्राइमरी के साथ। अब इसमें बॉर्डर कलर तो दे दिया आपने, ठीक है। उसके बाद इसमें आप साइज भी दे सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप लिखते हो कि बॉर्डर बॉटम चाहिए मेरे को, मतलब नीचे बॉर्डर चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको एक बात सिखाता हूँ। ये तो चारों तरफ लग गया क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे बॉर्डर लिखा था, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर बॉटम या बॉर्डर स्टार्ट देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट। इससे क्या होगा, सिर्फ स्टार्ट की तरफ एक बॉर्डर मिलेगा आपको। उसका मैं विद अगर बढ़ा के देता हूँ फिर आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बॉर्डर का विद कैसे देते हैं, बॉर्डर का विद, हाँ ठीक है। 5, 5 साइज का आप बॉर्डर देना चाहते हो तो जो है ये देखो 5 साइज का बॉर्डर लग गया, दैट इज प्राइमरी। तो सबसे पहले आपको बताना है, देखो क्लासेस में बॉर्डर स्टार्ट कि आप लेफ्ट साइड देना चाहते हो, उसके बाद आप बताते हो कि कौन सा कलर का दोगे, उसके बाद आप बताते हो कौन कितना थिकनेस का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी और बता सकते हो चीजें, जैसे कुछ रेडियस देना चाहते हो, ठीक है। बॉर्डर स्टार्ट में तुम दोगे आ, जैसे ये देना चाहते हो राउंडेड स्टार्ट, इसमें साइज भी दे सकते हो। तो राउंडेड 3 दे, राउंडेड 4 भी दे सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप राउंडेड 4 दे दो तो जो है लेफ्ट साइड वाला राउंड हो जाएगा। ये देखो, तो देयर इज नथिंग स्पेशल हियर, ओके, लाइक टू बी थिंकिंग अबाउट। ठीक ठाक सा चीज़ है।
कुछ खास नहीं, एक बार वीडियो देख लेते हैं। check. So if you closely notice this particular element, okay, this has border on all four corners. Okay, this is the border that it has. But if you only want border at the top, what do you write? Border dash top. That means you added 0 plus border top. Okay, but my point it is that I added border top just because it is adding it. Okay, this is something that I'm adding to no border. So no border plus border top give me a border at the top. If I want to add border at the end, that means at the right. Okay, then I would also have to add another class for border dash end. Okay, so I'll keep adding the border on the direction way: success, danger, this is warning, this is info, this is light, this is dark, and this is white border. This is not visible simply because the background is also white. Then comes border width. So if we talk about this border width, you can see that we have 5 border widths. Okay, this being the lightest, this being the most heaviest. So we have 5 different things. Then let's discuss the border radius. You should check that if you want a border on all 4 sides, you just need to give rounded. For border radius, we don't have BR or something like that. Rather, we have rounded. So now here, if you want it on the top, rounded end, that means on the right, rounded start would give you on the left, rounded bottom would give you at the bottom. And if you want the element to look like a complete circle, you want it to give rounded circle. Okay. And remember what is the actual CSS value for it. CSS value for this would be border radius with a value of 50%. Absolutely correct. Okay, this is something that you will be given. Okay, I hope that is clear. So if I give border radius 50% to it, what is going to happen is something like this. It would convert this into an oval kind of structure, basically something like that. Not a pill. So if you want to create a pill-like structure, you need rounded dash pill. Okay, that is the difference. Now, if you want to increase or decrease the roundedness of your border, basically the border radius that you're given. Sometimes it's 10 pixels, sometimes it's 20 pixels, sometimes it's 30 pixels, right? So these are the relative values. And why we have small values, you can say that it is very less rounded. See, in real life, when you're actually using these to make some components, you will understand that this is the highest roundedness that you will add to any particular element. Hence, whatever classes they have created are for the values that are most commonly used. Okay, so that is why you have such values. Okay, with that in mind, our discussion on border and border radius is done. See everyone, this is super easy to understand. Okay, border is something that we've already learned so far. Border radius is something we already know how to implement. Now it's just time to understand what are the classes. So we are just reading, actually, we are just reading the corresponding classes for giving sizes, for giving the border radius, for giving the border width. Okay, all these things you already know. We are just checking what are the classes. Actually, we are just skimming through the documentation and we are. चलिए, जो ये डॉक्यूमेंटेशन था उस हिसाब से अगर हम, जैसे यहाँ पे मैंने बॉर्डर स्टार्ट लिखा था, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि तीनों तरफ बॉर्डर आ जाए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा पता है? सबसे पहले तो मैं बॉर्डर दूँगा चारों तरफ, इससे बॉर्डर, ठीक है? अब उसके बाद मैं लिखूँगा बॉर्डर टॉप 0, बॉर्डर टॉप 0। इससे क्या होगा? मैंने जो है ऊपर का बॉर्डर को रिमूव कर दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको, हैव अ लुक एट दिस। सी, मैंने जो है ऊपर का बॉर्डर को रिमूव कर दिया है और ये वैसे इन जनरल अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप ऐसे दे सकते हो। बॉर्डर जो है चारों तरफ देता है, बॉर्डर टॉप सिर्फ ऊपर देता है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। अरे यार, टांगों की जो पेन है ना, ये बढ़ रहा है। सोच रहा हूँ रेस्ट लूँ या नहीं, क्या करूँ? आई एम फीलिंग रियल पेन ब्रो। नींद भी नहीं आता, पता है? जब सोते हैं ना तो टांगों को सीधा करना पड़ता है, तो उस टाइम भी दर्द होता है। तो मैं बैठा हूँ, अब बैठे हुए भी दर्द हो रहा है। सोच रहा हूँ पेन किलर ही खा लूँ। यार मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, ठीक है? करेंगे फिर से थोड़ी देर बाद, दोबारा एनर्जी मिलेगा तो। आज के लिए मतलब अभी के लिए इतना ही।